Good morning, children. Welcome back to the social session, children. We have been learning about the impact of colonialism in India, where we have seen its impact on the forests, its impact on the industries, and we also were learning about its impact on the labor policies, especially on the working conditions of the laborers. So, as part of that, we have seen that there was no time even for the lunch also. Once the machines got started, there was no break or stoppage of work at all. Even in order to eat their food for 15-20 minutes break also, they have to ask their neighbors to look at the machine and go and come back very fastly. Even for the washrooms also, they have to take the help of the neighbors so that they may take care of their machine. And it used to start, the work used to start from the sunrise and it used to close down at sunset. So it was a hard working conditions. There was no holiday at all, and every day is working day. And there were also plenty of fines they used to collect. They usually used to collect a large number of fines also from the workers. How? The owners would fine the laborers for the smallest reason, even if they came late. If the cloth got spoilt, or if the owner thought that the labor did not work sincerely. In such conditions, immediately there would be fines and they were deducted from their month's wages. अगर बनाते वक्त क्लॉथ कुछ स्पॉइल हुआ, वो मशीन की वजह से स्पॉइल हुए तो भी फाइन डालते थे, अगर लेट आया तो फाइन डालते थे. सो देयर वर ऑन वन और द अदर प्रिटेक्स्ट, एक वजह के, एक छोटे से वजह के लिए भी फाइन डाल के वो फाइन का अमाउंट जो है वो लेबरर का वेजेस में से निकाल देते थे, डिडक्ट करते थे. So all the laborers, that is men, women, children, had to work under such conditions for 12 to 14 hours, 14 hours in summer and 12 hours in winters. So then it was in 1880, for the first time in 1880 what happened? Something new happened. Something new, नया कुछ हो गया. क्या हुआ ये 1880 में? 1880 is considered as a boon year for the laborers. सो इलेक्ट्रिक बल्ब्स, अब जो बल्ब है नहीं घरों में हम लगा रहे, वो बल्ब जो है इट बिगैन टू बी फिटेड इन द मिल्स. वो नया आविष्कार हुआ था, इन्वेंटेड. सो दे इट वाज डिस्कवर्ड. सो दे स्टार्टेड अरेंजिंग दीज इलेक्ट्रिक बल्ब्स. एज द आवर्स ऑफ लाइट इंक्रीज्ड, द आवर्स ऑफ वर्क आल्सो इंक्रीज्ड. जब तक क्या था, सूरज राइज से लेके सूरज सनसेट तक द वर्क यूज्ड टू कैरी ऑन बिकॉज ऑफ द लाइट. बट because of the invention of these electric bulbs, the hours of working also has got increased. Now it was necessary to stop work when the sun set. It was not necessary now, because previously because of the light, because it was dark, they have to stop the work. But now bulbs आया, bulbs के वजह से और ज़्यादा देर काम करने शुरू करें. So and now it became common to take up to 15 hours of work each day from the each laborer. 15 घंटों के काम जो है वो लेना शुरू करें वो लोग. बिकॉज सी देर वॉज ए गुड डिमांड फॉर द क्लॉथ एंड दे यूज टू मेक ह्यूज प्रॉफिट ऑल्सो विद दैट. देर वर सो मेनी हार्डशिप्स एट वर्क प्लेस ऑल्सो, एंड ऑन टॉप ऑफ इट देर वॉज नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इधर. ओके, अगर तुम पसंद नहीं आए तुम्हारे को निकाल दे सकते. यू कैन बी फायर्ड आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. देर वॉज नो सिक्योरिटी फॉर योर एम्प्लॉयमेंट. इफ ए मिल सफर्ड लॉसेस, द ओनर वुड सिंपली थ्रो आउट some laborers and reduce the wages of those who continue to work. अगर मिल लॉसेस में आ गया समझो, थोड़े लोगों को निकाल देते थे और जो रह गए उन लोगों का वेजेस कम करके उसको देते थे. दिस इज व्हाट यूज्ड टू बी कंटिन्यूड. एंड हाउएवर इफ द मिल earned a profit, would the owner ever increase the wages? वो तो नहीं करते थे. नो, दैट हार्डली एवर हैपेंड. अगर मुनाफा प्रॉफिट आया तो उन लोगों को देना नहीं है, मगर लॉसेस आया तो उन लोगों का वेजेस में से निकालना जो है. So this is what continued for many years for the as a workers conditions. Against to this, there were many laborer struggles which took place. Laborers have struggled against this oppressive working conditions from 1880, 1870. There was one strike after another in Mumbai. So to begin with, there were no organizations of union, laborers का union और laborer trade union है नहीं अभी. ऐसे ट्रेड यूनियन नहीं तो लेबर यूनियन, लेबर एसोसिएशन नहीं था जब. सो द लेबरर्स ऑफ ईच मिल वुड गेट टुगेदर टू गो ऑन स्ट्राइक. एक ही मिल का वर्कर्स जो है वो पूरा मिल के स्ट्राइक पे जाते थे. एंड दैट वुड ब्रिंग प्रेशर ऑन द ओनर्स, बिकॉज ऑल द वर्कर्स यूनाइटेडली दे वेंट ऑन स्ट्राइक. दैट वुड ब्रिंग प्रेशर ऑन द वर्कर्स, ऑन द ओनर्स. So for instance, in 1892,
a mill owner of Mumbai were thinking of reducing the wages of laborers. When the laborers got to know about it, they prepared themselves for a struggle. 1892 में एक मुंबई का मिल ओनर जो था वो वेजेस का वर्कर्स का वेजेस कम करने का सोच रहा था. ये मालूम पड़ते ही दे वेंट ऑन ए स्ट्राइक के लिए रेडी हुए थे. द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड एन ऑफिशियल फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज वही साल. दिस इज व्हाट द फैक्ट्री इंस्पेक्टर रोट अबाउट द लेबरर्स. क्या बोल के लिखा था बोले तो, इफ ए रिडक्शन इन द वेजेस इज एक्चुअली मेड, इट इज पॉसिबल दैट देयर विल बी एन ओवरऑल स्ट्राइक इन मुंबई. अगर वेजेस कम कर रहे देन देयर विल बी ए ओवरऑल स्ट्राइक, पूरा मुंबई में स्ट्राइक होने का संभावना है बोल के वो लिखे थे. एंड दो देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन ऑफ द लेबरर्स, मोस्ट ऑफ द लेबरर्स बिलोंग टू द कॉमन कास्ट, क्लैन एंड विलेजेस. वो पूरा जो है यूनियन नहीं था मगर एक ही कम्युनिटी के वाले हैं, इसीलिए दे कैन कम easily united and they can take steps for the overall strike in Mumbai. So this is one example how the laborers would struggle to protect their interest. In 1900 and 1901, around 20 mills of Mumbai reduced the laborer wages by 12.5%. In response to this, 20,000 mill workers stopped work and went on strike. All the 20 mills remained closed for 10 days. So these are some incidences where the laborers have struggled against to the mill owners' oppressive steps, and they have fought against to the oppressive measures. In tomorrow's class, we shall also learn how these labor problems were addressed by the government and the mill owners. Thank you, children.